you. And could you please give me the camera control? Nobel. Okay, I have one question which anybody can answer, but it is specifically for Nobel. Okay, so who will come and tell me what is Nobel? Like, why is your classroom named after Nobel? Who was Nobel? What is it? Can anyone tell me? You should know why your class is named after something. Why is your classroom called Nobel? Who was Nobel? And what is Nobel? Is it a movie? Is it a award? Is it what you call something? Yes, I can see quite a few hands raised. Yes. In Nobel classroom, on my left, the girl at the back end. She was the first one to raise. The last bench. Yes, come forward. Come. Everyone pay attention. I'm sure many of you know this. Yes. It is a award. It is an award. It is an award. Okay. So, is it an award given in some country or it is an international award? Which country gives it? Who? What was the full name of this man, Nobel? What was his full name? Who will answer this? See, next time I'm going to ask each one of you what this is. Okay, so next time I'm going to ask Oscar, classroom. Oscar, you should know what Oscar is about. Okay, what kind of awards are Oscars? Anyone knows? Okay, you know, very good. Okay, I'll tell you about Nobel. It was Mr. Alfred Nobel. Sir Alfred Nobel. He was a Swedish man from Sweden. And what was his biggest discovery? What did he find or invention, whatever you say? Okay, he found dynamite. You know, dynamite is used to blow up mountains and stuff. So and it is also used like in many other areas. So he invented dynamite and he made lots of money, lots and lots of money. Okay, and then he put a huge amount of money on the corner and he started this award. Now we have like 6 categories. Okay, next time you should know the 6 categories where Nobel Prize is given. Can anyone tell me the first category where it is given? This prize, this Nobel Prize? Yes, I can see a few hands raised. Who will tell me? Okay, this is called awareness. You should know about all these things. Okay, Oscar, I could see one hand raised on my left. Please come forward. Which award? Like, in which category? I saw this. There is a child who raised a hand. I can't see the child. Oscar on my left. Yes, you're raising your hand again. Come out. Oscar, classroom. Which award? Sorry, which category? Just one. Tell me just one. Okay, one is science. Okay, you get for physics, you get for chemistry, you get for medicine. Okay, medicine, you get for economics, you get for literature. So all these categories are there. There are 6, and I want you to know all the categories. I'm going to ask you a lot of questions now. Okay, because we are going to start with a lot of communicative, like, back and forth, talking, asking. That is how we are going to go about. Now, first and foremost, because we are going to start with communicative stuff, you will see that
you will see that there are some do's and don'ts. So what is the first category about? What is the first 5 do's and don'ts for? When we communicate, what is very important? What is very important? Okay, Nobel, middle row, third bench. The boy on my right, Aja. When we communicate with someone, what is very important? Huh? I protect them. What is very important? I protect them. I can't. Okay. I'm sorry, beta. I'm unable to. Like voice is not very clear. Not sounding very clear. Ma'am, could you please tell me what he's trying to say because I am unable to understand. Eye contact. Yes, eye contact. And one more thing I have noticed that you people put lot of stress on the last letter. Okay, it's eye contact, not eye contactor. Please don't put. This is a very common mistake which is made by everyone. Eye contact. Please listen to how I speak. And next time I want it like that. I'm going to be very strict now. Okay? We have to improve our pronunciation. And the way we, when we say eye contact, like it gives a very huge, what you can say, it tells about from which region you are. We have to speak neutral English. Okay? We don't want any kind of, what you can say. So I'm just trying to tell you that we have to speak very, very neutral English. So we have to go by the language and not have any kind of influence of other languages on it. Okay? So please don't do this. No, it's not eye contact. Last वाले को stress नहीं करना. Eye contact. Eye contact. That's it. And this is a very common mistake. We have to overrule it. We have to come over it. Okay, here. So the first 5 sentences, what are they trying to tell you? That what are the 2 most important, things in communication? One is, who will tell me? Who will tell me? Don't be afraid. Just walk. Okay, Oscar. On my, yes, come, beta, aaja. Yes. Ear. Ear से आप क्या करते हो बेटे? Listen. You listen. अभी listen नहीं होता, listen. Everybody will in your mind repeat listen. Listen. Okay? It's not listen. It's listen. So everybody please, and when I check you or I correct you, don't feel bad. This is how we all learn if we are making mistakes. So it's listen. Okay? Listening skills. So you use your ears to listen. Okay? So first important thing in communication is listening. You listen. Okay? Second important thing is, like, what do? What is the second important thing? You use your mouth. The same little girl who came and told me, listen, okay, Shaurya Chakra, last bench on my right, please come. The girl who raised her hand, which is the second most important thing in communication. Second most, yes, beta, get up. Don't waste time. Shaurya Chakra, last bench. Yes. Aaja, fast. Be quick. So first is listening. Second is, what do? Yeah.
It is talking is like speaking. Okay. So these are two major areas of communication: listening, speaking. Then we have writing. We communicate through writing also. Okay. That is also a way of communication. And then when we communicate through our body language. Okay. अगर मुझे गुस्सा है, like, I don't utter a word. I just stare at you. I just stare at you, and you understand, like, oh, ma'am is angry, or ma'am is upset. Or when your friend come and you're angry and you do like that. Or no verbal communication, no listening, hearing, no writing, but your body language. We convey a lot through our body language also. If we see someone without saying like, oh, like we do like this, okay, like, we tell them we are so happy to see you. Okay, I know I love theatrics in my class. Okay, I love. And I think so. That's a very good way of teaching also. So it's like, you see your friend or you see your aunt, uncle, dad, mom, like, you run, rush, like, these are different ways of communication. But foremost, formal ways are speaking, listening, writing. Okay, they are like every day. So today we are going to learn the do's and don'ts of first one is about listening, which is a very important thing. बिना बात सुने, बिना बात understand किए, if you start answering, reacting, wrong, absolutely wrong. Okay, so here, look at these and go through it and tell me whether it is a do or a don't. Okay, the first five, they are listening. The second five are speaking. Okay. Okay. Can we start? I'm sure you people are done. The first one, slouch or slump. First, you will come and explain it to me. What does slouch and slump means? And then you will give me the answer. Okay, first give me the answer and then explain what is slouch and slump. Why? Listening. If you are slouching or slumping, is it yes or no? It is a do or a don't? Yes. Please come. Who will come? Anyone? I want thousands, hundreds of hands up. Shaurya Chakra on my left. Okay? Yes, that boy who just straightened up. Aja boy. Aja, who's sitting on the third last bench. Come. Third last. Yes, the first one. The first one is slouch or slump. कोई तुम्हें अपनी बात सुना रहा है, आप सुन रहे हो, but you're slouching and slumping. Slouching or slumping. So what is it? Is it a do or a don't? Yes, bache? You didn't answer? Yes, Tara Chakra. It is a do or a don't? Don't. Very good. So now tell me, stay there, stay there. What is slouching? What is slouching? How did you come to know? If you don't know the meaning of slouching or slumping, how do you know if it's don't? What is slumping? I'm sure your teachers keep correcting you in class and they say don't slouch. बैठे बैठे जब तुम ऐसे नीचे 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 जाते रहते हो और ऐसे करके बैठ जाते हो. That is slouching. Okay? That is slouching. So that body language gives a different meaning. Okay? I am not attentive to whatever you're saying. Okay? Or I'm just casually listening to whatever. If somebody is telling you something very important, you need to sit straight and make that person feel that, yes, I am listening. I'm paying attention to whatever you are saying. Somebody has come up with a very important news, okay, or something, and you are just like, slouching. I said, aram se lete hue. So, like,
half sitting, half in a reclining position. It is not a good thing. And slouches, like that is slumping, and slouching is जब ऐसे कुब निकाल के बैठते हो. Okay, that is also like, very casual and not attentive kind of a message is given. So slouching and slumping is not a good thing. Okay, so when you are listening to someone, sit straight. Next, give the speaker constructive feedback. Okay, Pulitzer, middle row, fourth bench. Aja. Pulitzer, middle row, fourth bench. Come. Give the speaker constructive feedback. Come out. Yes. And before he answers, I have a request. But you all have to answer and you all have to ask questions. Otherwise, communication is like two-way. I can't go on talking all the time, and neither can you. So it has to be communication, means it has to be a dialogue, not a monologue, which I'm doing right now. Bolti cha rahi hu. Yeah. Yes. Give the speaker constructive feedback. Is it do or a don't? It is a do or a don't. Done. It's do. It's a do. Constructive feedback is किसी को उसकी बात सुन के उसको एक अच्छी एडवाइस देनी. Okay, something which is going to help that person. Probably that person has come to you seeking for some kind of a help or some understanding, some reason, some logic, and you will listen to that person and uski problem mein ya uske saath, like whatever cause he has brought to you, you will give him a good feedback. Okay, this is happening. I think you should do this, or this action should be taken, or you should prevent this, or this, something like nice. Acknowledge the speaker. Acknowledge the speaker. Okay? अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं इसके साथ खेल रही हूँ, मैं अपना फोन देख रही हूँ, आई एम गोइंग थ्रू दिस, am I acknowledging the speaker? No. That is like being very rude. Okay? So acknowledging is like, okay, stop for a moment, listen to that person. Okay, and then like when it starts like a two-way conversation, okay, then if you're doing something important, you may continue, but you have to acknowledge the speaker. It's not that वो बोल रहा है आप उसको पीठ दिखा रहे हो, like something like that should not happen. So acknowledge the speaker is a do or a don't. Yes, Oscar. Okay, on my left, I can see a hand raised. Raja Bar. Yes. Come out. Come out. Come out. Acknowledge the speaker. Yes. He's do. Yeah, it's do. It is do. You have to do something like that. Show interest in what the speaker is saying. Show interest in what, yes. Nobel, last bench on my left. That girl has raised her hand again. Very good. Aja, come. It is do. Show interest in what the person is saying. Don't be disinterested, okay? Next is do something else while you're listening. Do something else while you're listening. Is it a good habit? Okay, Paramveer Chakra, first bench, middle row. Aja. It's a do or don't. I can't hear you, beta. I think so. Yeah. Could you please speak again? Don't. Yes, it's don't. Okay. Now, so do and don't. You know what are the do's and don'ts? How many of you follow all these things when you're listening to someone? ये सारी बातें कौन ध्यान में रखता है when you're talking to someone? Yes, Oscar, I can see on my right hand there is a child who's raised. आ जाओ बेटा, come out. Come out. Do you follow all these things
when you're talking, when you're listening to someone, when somebody else is talking to you? ये वाला Yes, so very good. So what do you do when somebody, okay, I'll just tell you, when your friend is talking to you, what do you do? And you're doing something very important. So what do you do? Can you tell me? You continue doing whatever you're doing, or you drop your pen or drop the things you're doing, and then yes. yes. So I want, see, I don't want monosyllables. Mono means one. Yes, no, mujhe pata. I want sentences. Tell me, talk to me. Yes, I do. I Yes, I listen to my friend. I make my friend sit down, make my friend comfortable. I listen to my friend. I acknowledge whatever he's saying. हम बीच बीच में हाँ अच्छा ऐसी बातें करते हैं ना, ये क्या है? This is acknowledgement that I'm paying attention. Okay, I sometimes try not to interrupt, but I do have, if I feel I have to ask a small question in between, I do ask. Okay, or I first listen to that person, and then later on I ask the questions which I want to. Okay, so I want a conversation like this. Okay, bache? So can you tell me now, when you talk to someone, when you are listening to someone, what do you do? ठीक है चलो Huh? talking like जैसे I am speaking. Okay, आप first time आप हिंदी में बता दो, but I will not accept हिंदी और पंजाबी, because you know what is happening, आप इतनी हिंदी पंजाबी बोल रहे हो कि you don't think in English. When you want to learn a language, you have to start thinking in that language. We can't translate all the time in our head. Okay, if somebody shows you this, okay, ये क्या है? This is like what? तो पहले सोचोगे, आई एम जस्ट सेइंग फ्रूट है, मैंगो है, तो आम देन मैंगो, लाइक यू नो, नो, इट शुड बी immediately you see something, you think in English. So I want that, please. So for that reason, you have to speak continuously in English. Okay, yes, bolo. What's a character who's there the train Okay, again, like you know, there is a double sound when you're speaking. Could you speak again? When I do that things if You do that thing. Okay, I told you not to lay too much stress on the last letter. Okay, so do that things, because then you know that Punjabi accent is very pronounced in English. That, like, you know, it's that, not that. But t बोलना नहीं है. Okay, that. तो उसको एकदम लो वॉल्यूम पे, उस पर स्ट्रेस नहीं डालना है ट पे. ओके, सो यू डू those things, or you do that things. Very good, very good. But I would have loved if you had given me at least 2 3 sentences on it. Very good. Next, slowly, I think so in 2 3 classes we'll get there, don't worry. Now, so this was all about listening. Now speaking. Okay, so these are the do's and don'ts for speaking. Quickly, let's do it quickly, fast. Avoid making eye contact. Okay, Paramveer Chakra, center row, first bench, aajo fadafat. Come. don't Yeah, it's avoid making eye contact. It's, see, once again, it's don't, not don't. Okay, that is the difference. It's don't. Everybody in your mind repeat don't. Okay, and next time you should remember this. It's not don't, it's don't. Don't is another word, DAUNT. Okay, so when we start working on our pronunciations, it's going to help us this way. Very good, very good. It's a don't. You have to make an eye contact. आप, अगर मैं यहाँ सामने देख के बात नहीं करूंगी, I'm making eye contact with you, I look there and I talk, how stupid it will look. Okay, next.
Speak at an appropriate volume. Speak at an appropriate volume. Very good. From Paramveer Chakra. Middle row, I see a hand raised. Aja beta, fast. Paramveer Chakra, I can see a little girl who has raised, a little boy, I think so, who's sitting with a green t-shirt boy. आप next वाला बता दो, आ जाओ. Speak while eating or chewing. On my left, Paramveer Chakra, एक तो center से आया बच्चा, एक from my left. Second last bench, third last bench, आ जाओ. Speak while eating or chewing gum. Do or don't? अपने मुंह में खाना डाला हुआ है. Yeah, it is a don't. It looks very ugly when you are like, you're chewing, your mouth is full of food and you're talking. It is a very horrible sight. Okay, so chewing gum, like you're doing yum 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 and you're talking, no good. Okay, so this is a don't. Understand non-verbal clues. Understand non-verbal clues. Yes. Speaking. Yes. Paramveer Chakra on my left. Boy in the third last bench. Aja. Understand non-verbal clues. You can, you can understand non-verbal. Yes. Why should you ignore that? Okay. But yes, if you have understood, you're talking, telling something, another person is not liking it. So uske face fake expression aa gaya. Okay. You are telling something and that person is getting angry, non-verbal clue. Or a person is upset or feeling embarrassed. All are non-verbal clues. Next is speak in a harsh tone or voice. Do you think it's a good thing to be rude to people? Okay, Paramveer Chakra, that girl who just stood up. Aajo, 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 daud ke aao bahar. Yes, you're standing up and sitting down. Aajo, this little girl in the middle row. Aajo, beta, Paramveer Chakra. Middle row, yes. Speak in a harsh tone. Yes. Don't. Okay? No. You cannot speak. Even if you're angry, you cannot raise your voice. This is one of the basic etiquette. Okay? You can use a firm voice, but you can't use a harsh tone. That's not right. Speaking at an appropriate volume. Okay? Padma Shri, that boy on my left who's raised hand. Girl, I can't see from. Yes, there's a boy. Yes, look up. Yes. Yes, and you have to speak at an appropriate volume. It's a do. Okay. So now we know the rules of speaking and listening. These are the things which have to be kept in mind while listening and while speaking. And one more thing is that we should always, let the person who's talking finish and then react. React to nahi karna chahiye, then respond. Okay, so this is what you should do. Now, please circle the homonyms. Homo is a Greek word which means same, and onyms means names. So they have the same name. That means they have the same sound, but they have different spellings and different meanings. So these are homonyms. The cowboy rode the horse into town. Okay, what will come here? Quickly, let's finish this fast. Okay. Okay. So the cowboy rode, what will you write? The first one, the cowboy rode his horse into town. What is wrong here?
What should come here? What should come here? Okay, Nobel. Middle row, I can see a hand raised. Raja first. So homo means same and nim means name. So it is like the same sound. Homophones are also same. Phones means sound. So same sound. Yes. Right. Right? This is wrong. So we will put the other tense. Road. This is right. So replace it. Okay? And what I want you to do with these words, you can make your own small story and write in the lines given. अपनी एक छोटी सी story बनाओ. Okay? And you can write this. You can use both the homonyms. That he rode on the road or something like that. Like, you can use both the words. Now, he did not waste any time getting there. Waste. Which is the word here? Which is the word? Okay. Anyone from Oscar? Anyone? Yes. Padma Shri. I can see a hand wave. Okay. Come, Aja. He did not waste any time getting there. WASTE. Waste. Okay. So this and yeah, it will be WASTE. This is wrong. This is right. What is this waste? Aapki kamar. This is your kamar. Okay, and this waste is like, obviously wasting something. Next will come from Padma Shri because I know many of them are eager to answer. Next, he went to the bank to get a loan. He went to the bank. Oscar, last bench. I can see a hand raised. He went to the bank to get a loan. Next, Padma Shri. He went to the bank to get a loan. वेंट की जगह पे गो आएगा. He go to the bank to get a loan. No, beta. ये सेम साउंड के वर्ड्स होंगे तो गो एंड वेंट आर नॉट सेम साउंड. ओके, सो यहाँ पे कौन सा होएगा? बैंक में हम लोन लेने जाते हैं. व्हाट इज अ लोन? Who will answer this? Yes. Paramveer Chakra. I can see a boy standing and raising his hand. आ जाओ फटाफट आओ. Paramveer Chakra, last bench. जल्दी से आ जाओ. जल्दी जल्दी जल्दी. Fast fast fast. Ma'am, L A N वाले लोग ना दें. Very good. So this lone means akela. He's a lone wolf. Akela. So यहाँ पे loan होगा like LOAN. When you take a loan from the bank, you take a loan from your dad. Dad, give me a loan, or you take a loan from your friend or your sibling. Okay, taking loan is not a good thing. He had to wait a while. He had to, and I want all of you to write a small story. Only 3-4 lines, but use these words. Okay. Padma Shri, that boy who's standing on my left, yes. He had to wait a while. A while means thodi der. Okay. He had to wait a while. WAIT. Yes. So this wait is, हमारा जितना भार होता है. This is wrong here, and we have wait here. See, they all sound the same. Okay, name is the same, sound is the same, but they are different in spelling and meaning. Okay, but soon he had money to buy land of his own. Soon he had money to buy land of his own. Oh my God, Paramveer Chakra. First bench on my right, there was someone who was raising his hand. I can't see you though in the camera. I can only see your hand. Aja beta. Paramveer Chakra. Yes. Yeah, that's right. He had money to buy. What will come here? Buy. And space by buy. But this is wrong. This is right.
So your homework is next time I'm going to devote the first 10 minutes of the class to listening to your stories. I want to listen to your stories, okay? So what you all will do is ये छोटी सी एक स्टोरी है इसको चेंज करना है आपने वर्ड्स ऐसे ही रखने हैं okay you have to use same words and you can write 3-4 lines small story each one of you please do it and then you will come and you will share your story with us okay so today we end the class I hope it was fun for you and from next time be prepared to speak okay we have a lot of talking to do we have a lot and lot to share and talk about so have a good day and I hope you enjoyed. I love the class. Okay. So be good. Bye, everyone. Bye. Roll number one. Roll number one, question number one. The relation between simple and complex carbohydrates is. Can you tell me the answer? कल आपको वर्कशीट मिली होगी आपने किया होगा काम पुलित्जर बेटा स्टूडेंट्स बी सिटेड ऑन योर डेस्क हाँ जी ऑप्शन कौन सी आएगी बेटा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ठीक है रोल नंबर वन आप अपनी सीट पे बैठो बाकी दोनों यहीं रहेंगे सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स also called as sugars. Why they are called as sugars? Because these are sweet in taste. They have single unit, एक unit है. For example, glucose. They may have two units joined together. For example, सुक्रोस या जो बेटा कॉमन शुगर है जो चीनी आप खाते हैं that is formed of two units ठीक है these are sweet in taste whereas जिसको नहीं पता वो साइड में लिख लो complex carbohydrates non sugars है बेटा these are not sugars why they are not sugars पता होना चाहिए इधर देखो सामने everybody here छोड़ दो सब कुछ सुनो पहले why they are non sugars because these are not sweet in taste ये मीठे नहीं होते हैं ठीक है that's why they are non sugars for example starch बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं joined with each other many hundreds branched है ये और ये सब क्या है these are glucose अगर सिंगल ग्लूकोज का यूनिट है तो वो सिंपल शुगर है बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं तो वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वन एग्जांपल इज स्टार्च सेकंड एग्जांपल इज फाइबर्स और यू नो सेलुलोज सेलुलोज कहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट्स में प्रेजेंट है these are complex carbohydrates right starch fibers complex sugar common sugar या sucrose these are simple sugars these are simple carbohydrates or you can say these are sugars ठीक है जी अब बेटा अब यहाँ पे देखो ये तो मीठे है आप खाओगे डायरेक्ट आपको मीठा लगेगा बट आपने क्या किया आपने आलू खाए यू ईट पोटैटो पोटैटो इज रिच इन स्टार्च यू नो दैट इधर ध्यान से सामने देखो पद्म भूषण गर्ल्स सीधे होके बैठो बेटा पीछे को होके थक गए आई नो पीछे को होके सीधे होके बैठो तो बेटा व्हेन यू ईट पोटैटो
When you eat rice, when you eat bread, एक बार मुंह में डालो तो हमें मीठा थोड़ी लगता है, हमें एकदम मीठा नहीं लगता. नोबल बॉयज, पीछे क्या है, सीधे होके बैठो, मिडल रो, सीधे होके बैठो. यस, सिट स्ट्रेट. बेंच पे हमने रेस्टिंग नहीं, सीधे बैठो, कमर सीधी, कमर सीधी, पीछे को होके बैठो. अभी हम लिख नहीं ना रहे, अभी हम सिर्फ सुन रहे हैं. एवरीबडी सिट स्ट्रेट. ठीक है जी. तो हमने पोटैटो खाए, राइस खाए, ब्रेड खाए, मुंह में डाला. इट डजंट टेस्ट स्वीट, मीठे नहीं लगते हैं. बट व्हेन वी च्यू इट, आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम, इट टेस्ट स्वीट. हमें थोड़े टाइम बाद मीठे लगते हैं. क्यों? बिकॉज हमारे माउथ में सलाइवा है. सलाइवा ने क्या किया? स्टार्च को तोड़ दिया. इसके बीच में जो बॉन्ड्स थे वो टूट गए, तो ग्लूकोज अलग अलग हो गए. ठीक है, डाइजेस्ट हो गया स्टार्च, क्या बना? ग्लूकोज बना. एंड ग्लूकोज इज स्वीट इन टेस्ट. ठीक है. सो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ध्यान से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन डाइजेस्टेड टेस्ट स्वीट. व्हेन च्यूड टेस्ट स्वीट. हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं है. आप पूछ सकते हो कि हम ब्रेड खाते हैं, उसमें तो स्टार्च है, बट जब हम उसे च्यू करते हैं तो वो हमें मीठे लगते हैं. आप कहते हो कि भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं है. व्हाई? बिकॉज आफ्टर च्यूइंग द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स are changed into sugar, simple carbohydrates. That's why they are sweet in taste. ठीक है जी. तो परमवीर चक्र में रोल नंबर 1 तो हमने पूछ लिया था. आई थिंक रोल नंबर 3 से हमने पूछना था. रोल नंबर 3 एंड 5. हाँ जी, क्वेश्चन 2 बेटा. कौन? पूरा बोलो, सेंटेंस बोलो बेटा. Simple carbohydrates are the complex are starches and fibers. बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, whereas complex carbohydrates are starch and fibers. Very good. Then roll number 5. हाँ जी बेटा, सेम क्लास, रोल नंबर 5. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. हाँ, Simple carbohydrates break down quickly and give a bit energy. बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3 का सी. क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं होना पड़ता. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम खाएंगे, इधर देखो, when we eat complex carbohydrates, they first change into sugars, then they burn and provide energy. जब हम खेल के आते हैं, पसीने पसीने आए हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, एनर्जी नहीं होती, तो क्या होता है? मम्मा या आपके टीचर क्या देती हैं? आपको ग्लूकोज घोल के दे देती है पानी में कि ग्लूकोज वाटर पी लो. ठीक है. व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी, immediate energy, because it is a simple sugar. It does not require breaking. It burns immediately and gives us energy. ठीक है. तो यहाँ पे लिखो, simple carbohydrates, they quickly burn. Write down, simple carbohydrates quickly burn and gives us energy. Whereas सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बैठो बेटा, अपनी सीट पे बैठिए. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स quickly burns and gives us energy, whereas complex carbohydrates first change into simple carbohydrates. ठीक है जी. नेक्स्ट, पद्म भूषण. पद्म भूषण में आ जाइए बेटा. रोल नंबर 12, 14, 16. पद्म भूषण 12, रोल नंबर 12, 14, 16. नहीं है 12 तो 13 आ जाइए. 13, रोल नंबर 13, पद्म भूषण. अच्छा चलिए, ऐसे नहीं आएंगे तो मिडल रो में थर्ड बेंच पे जो दोनों गर्ल्स है वो आ जाओ. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. बोथ गर्ल्स कम. अपनी वर्कशीट लेकर आओ.
Question number 4. When we chew bread for some time, it begins to taste sweet. Why does this happen? माइक ऑन करो. हाँ. Yes, saliva breaks down starch into simple sugars, and simple sugars are sweet in taste. Very good. Next, girl. Which of these best describes the journey of complex carbohydrates? हमने पहले, हाँ बोलो बोलो बोलो, हमने पहले स्टार्च को खाया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज ईटन. उसके बाद क्या हुआ बेटा? कौन सी ऑप्शन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 की कौन सी ऑप्शन है? बाकी कोई नहीं बोलेगा, ओनली दिस गर्ल विल टेल. यस, ऑप्शन ए. ये आपको किसी ने बता दिया. बैठो दोनों, हम बात करते हैं. गो टू योर सीट. वेरी गुड, इट्स ए ऑप्शन. सो इट इज ईटन एंड स्टार्च इज दिस. बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है. तो ईटन के बाद it is digested and form glucose. This glucose, माइक ऑफ कर दीजिए और बैठो बेटा. एवरीबडी सेट जाओ. पदम भूषण जरा माइक ऑफ कर देना. ग्लूकोज goes into blood. ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में गया. Then इधर देखो, everybody here. From blood, glucose reaches to cells of our body. हमारी बॉडी जो है छोटे छोटे चैम्बर्स की बनी है. जैसे one wall is formed of small bricks. Likewise, परमवीर चक्र बेटा, बॉयज गर्ल्स क्या कर रहे हो? पीछे क्या है? इज द टीचर टीचिंग देयर? So glucose reaches to cells of the body. What do you mean by cell? Cell is the bricks of our body. जैसे एक wall छोटी छोटी bricks की बनी है. Likewise, living organisms are formed of small cells, and in cells ग्लूकोज बर्न्स. अभी मैं रेस्पिरेशन की बात नहीं करूंगी. ग्लूकोज बर्न्स, और बर्निंग के बाद क्या होता है? रिलीज एनर्जी. थोड़ा सा इस क्वेश्चन के सामने ये थोड़ी डिटेलिंग और लिख लीजिए. सो ऑप्शन ए, ईटन, डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, एनर्जी रिलीज्ड इन सेल्स. कैसे रिलीज होती है ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया. लिख लो ये, राइट डाउन दिस. नेक्स्ट, पुलित्जर. पुलित्जर में बेटा रोल नंबर 17. रोल नंबर 17 इज देयर. 17 and 18 both come. रोल नंबर 17, रोल नंबर 18, आ जाओ जल्दी से. माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6. यस, बोलिए. क्वेश्चन नंबर 6. सैचुरेटेड फैट्स आर यूजुअली क्या है बेटा? सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, चलिए आपने ये आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट स्टूडेंट बताइए क्वेश्चन नंबर 7. फिर मैं इसके बारे में समझाती हूँ थोड़ा सा. Which fat is healthy for the human? आप बताओ, भी जाएंगे. बता.
Which fats are healthy? हाँ, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड है ना? चलो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बी सिटेड और समझो थोड़ा सा ये फैट्स। Saturated, unsaturated, एग्जाम्पल्स याद रखनी है। एग्जाम्पल है बटर, देसी घी। अनसैचुरेटेड में आ जाते डिफरेंट ऑयल्स, यू नो, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, जितने रिफाइंड ऑयल्स है, सफोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब अनसैचुरेटेड है। तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? दीज आर प्लांट फैट्स। प्लांट से मिलते हैं, जैसे आप देख रहे हो। वेरस देसी घी किससे मिलता है? गाय के दूध से, भैंस के दूध से। तो दीज आर animal fats. And if you go in the kitchen, you can see that desi ghee, it freezes, या it becomes solid in winters. ठीक है? तो saturated fats, क्योंकि they have high melting point, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, दे गेट सॉलिडिफाइड, solids at low temperature. Whereas unsaturated fats, these have low melting point, therefore remain liquid. क्योंकि ये लिक्विड रहता है, दैट इज वाई इन अवर ब्लड वेसल्स दे डू नॉट स्टिक टू द ब्लड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स में ये जो ऑयल्स है, अनसैचुरेटेड फैट्स है, ये जमते नहीं है, तो इसलिए हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक भी नहीं होगी। बट अगर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाएंगे, ऊपर से पानी पी लेंगे ठंडा ठंडा सा, तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स में जाकर ये जो सैचुरेटेड फैट्स है, ये जम जाएंगे। जम जाएंगे तो इट कॉजेस डिजीजेस सच एज हार्ट प्रॉब्लम्स एंड ऑल, राइट? सो विच आर बेटर? अनसैचुरेटेड फैट्स आर हेल्दी। ठीक है? ये हमें पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बुक्स में ये दिया है, अदरवाइज फैक्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो हम बाद में किसी दिन बात करें। ठीक है जी? सो अनसैचुरेटेड फैट्स आर हेल्दियर देन सैचुरेटेड फैट्स। क्यों? ये हमने आपको बता दिया। ओके, देन नोबल। हाँ जी, नोबल में आ जाइए बेटा, 24 एंड 25 रोल नंबर। नोबल रोल नंबर 24, रोल नंबर 25 है ये स्टूडेंट्स। आजा आजा बेटा, जल्दी से आओ, जल्दी से अपनी वर्कशीट लेकर, जल्दी से। बोथ स्टूडेंट्स कम, स्विच ऑन द माइक। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is a common source of saturated fats? ऑयल है, बटर है, आपके सामने है आंसर। इट इज बटर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, बॉम्बे। नेक्स्ट, रोल नंबर 25, फैट्स आर मेनली यूज्ड बाय आवर बॉडी। कौन सा आंसर है बेटा?
फैट भी हमें चाहिए, क्यों? यस, प्रोवाइड एनर्जी एंड इंसुलेशन। चलिए, हमने आपने आंसर बता दिया, बट लेट मी डिस्कस दिस। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फैट? देखो जरा ध्यान से देखो, फंक्शंस ऑफ फैट्स। जो फैट्स है आपको पता है ना, आजकल बहुत कॉमन है, फैट्स कम करो, फैट्स हमारी बॉडी में जम जाते हैं। परमवीर चक्र गर्ल्स इधर ध्यान दो। तो फैट्स क्या है? फैट्स आर, ध्यान से सुनना है, एनर्जी रिजर्व। ये हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं। इफ देयर इज नो और लेस ग्लूकोज इन ब्लड, then fats burn to provide energy। है ना, हम कहते हैं फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। आप कहते हैं यूज तो ग्लूकोज करता है, देन व्हेन फैट्स आर यूज्ड फॉर गिविंग एनर्जी, जब फॉर एग्जांपल हम 4 दिन फास्टिंग पे है, हमने कुछ नहीं खाया, ठीक है, सिर्फ हम थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा रहे हैं, ज्यादा नहीं, तो ब्लड में क्या कमी हो जाएगी? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ठीक है। देन द बॉडी यूजेस फैट्स। हम बहुत मोटे मोटे लोग हैं, है ना, इंडियंस भी, इंडियंस लाइक मेरे जैसे, ठीक है। तो आई शुड प्रेफर दैट आई शुड नॉट ईट शुगर्स, आई शुड नॉट ईट पोटैटो स्टार्चेस एंड ऑल, ठीक है। तो मुझे शुगर फ्री खाना खाना, शुगर फ्री का मतलब है चाय में, दूध में, कॉफी में शुगर नहीं लेनी चाहिए, मिठाई नहीं खानी चाहिए, सो दैट देयर शुड बी लेस ग्लूकोज इन द ब्लड एंड द फैट्स डिपॉजिटेड इन माय बॉडी शुड बी बर्न्ड। फैट्स यूज हो, तो फैट्स कब यूज होंगे? जब ग्लूकोज नहीं होगा हमारी बॉडी। सेकेंड है फैट्स आर, ये लिखना है सबने, इंसुलेटर्स ऑफ हीट। बेटा ये जो चीजें है ना, इट्स नॉट कि ये आपके एग्जाम्स के लिए है, एग्जाम्स में तो चलो जो आना है वो आना है, आपको आता भी है, बट दीज थिंग्स आर ऑफ जनरल नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कहते हैं कि शुगर्स मत खाओ, मोटापा आता है, ठीक है। तो इधर देखो, एवरीबडी हियर, पद्मश्री इधर देखो। सो फैट्स आर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स मीन्स डू नॉट अलाउ body heat to go out, therefore पोलर बियर हमारी बॉडी में नहीं, बट जो पोलर बियर है हैज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में आपने किया है, क्योंकि फैट्स क्या है? इंसुलेटर है। पोलर बियर बहुत ठंड में रहते हैं, तो इसलिए जो उनकी बॉडी में हीट जनरेट होती है वो बाहर नहीं जाती, वो उनको गर्म रखने में हेल्प करती है। दैट्स व्हाई दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट। एंड थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फैट्स form a covering around heart, kidneys, eyeball, etc. क्या करते हैं फैट्स इन ऑर्गन्स को? फैट्स प्रोटेक्ट देम,
फ्रॉम इंजरी। बहुत ज्यादा ही कुछ हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज हम गिर गए, कुछ हो गया तो हमारे जनरली ये ऑर्गन्स डैमेज नहीं होते हैं, क्योंकि उसके बाहर एक इंसुलेटिंग लेयर है। ठीक है, वी हैव एन इंसुलेटिंग लेयर which protects us, which protects these organs from the mechanical injury. Beta, may I switch Pulitzer? May I switch off? घूम लो पहले, सैर कर लो। अब बाकी सब ने ना, सब टीचर्स ने पुलित्जर को पकड़ना है, क्योंकि मैं तब तक नहीं पढ़ाऊंगी जब तक तुम आराम से बैठोगे नहीं। ये क्यों लड़का घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है बेटा तू? Why are they roaming? नोबल, बेटा सीट पे बैठो। So these are the functions of fats. They provide energy, they are insulators of heat, and they protect. मैम कोई टीचर है तो जरा पुलित्जर में जाके देखें इन बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स है। इफ देयर इज एनी टीचर इन पुलित्जर, प्लीज सी, क्योंकि बच्चे बहुत घूम रहे इधर से उधर, उधर से इधर। आई डोंट थिंक देयर इज एनी टीचर, एंड प्लीज सी एंड गो एंड सी देम कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ इनके इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। एनी टीचर प्लीज गो एंड सी देयर। यस, मैक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, ऑल्दो यू ज्वाइंट लेट। चलिए जी, सो क्वेश्चन नंबर 10 मैक्स से, रोल नंबर 12, जल्दी से आ जाइए। हाँ जी बेटा, रोल नंबर 12 मैक्स से, जल्दी से बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, पोलर बियर survive in cold climates mainly because। हाँ, कौन सी ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन बी बॉम्बे, दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बैठो बेटा। हाँ जी, परमवीर चक्र, रोल नंबर 23, रोल नंबर 23 परमवीर चक्र, आजा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ फैट्स इन अवर बॉडी? माइक ऑन करो बेटा। हाँ जी, परमवीर चक्र, रोल नंबर 23, जल्दी से बोलो बच्चे। Which of the following is not a role of cardiology? इट इज क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ फैट्स इन अवर बॉडी? हाँ, दोबारा से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। यस, एक बच्चे का मिडिल रो में एक बच्चे का हाथ खड़ा है बेटा, फर्स्ट बेंच। हाँ, आप आके बताओ। हाँ, आजा आजा बेटा, आजा। हाँ, बोलो कौन सा आंसर है बच्चे? इट इज सी, मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे लिखो, इट इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो। इसके आगे लिखो, कौन बनाता है? इट इज ए फंक्शन ऑफ बोन मैरो। हमारी बोन्स के अंदर एक फ्लूइड है, वो बनाता है रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य चक्र, रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 सूर्य चक्र, आजा बेटा।
The main difference between kwashiorkor and marasmus is? हाँ जी बेटा, सी की डी, पहले ये बताओ ऑप्शन सी है, बोथ आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। हाँ जी, एनी अदर फ्रॉम सूर्य चक्र? हाँ बेटा, एक यस, इसी रो में जो पीछे लड़का खड़ा है, आ जाओ। बोलो कौन सा आंसर है बेटा? सी की बी बॉम्बे की सी चंडीगढ़? मुझे एबीसी में कई बार कंफ्यूजन होती है। टेल मी, बॉम्बे और चंडीगढ़? चंडीगढ़, बॉम्बे बिल्कुल ठीक है। Kwashiorkor is due to lack of proteins, whereas marasmus कब होता है? When there is deficiency of both proteins as well as carbohydrates. ठीक है, बैठो बेटा। हाँ जी बेटा, सेम क्लास में बेटा, टुवर्ड्स विंडो, लास्ट सेकंड बेंच पे जो लड़का है विंडो की तरफ, वो आ जाए। आजा आजा बेटा, आजा 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 आजा, क्विकली क्विकली, जल्दी से, भाग के, भाग के। क्वेश्चन मैं बताती हूँ कौन सा पूछना है। आजा, माइक ऑन कर बेटा। somebody help him, switch on the mic. Question number 14. Which of the following is a common symptom of kwashiorkor? kwashiorkor किसके कारण है? प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी के कारण है। क्या है इसका कॉमन सिम्टम? हम इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा? हाँ जी, द गर्ल इन द मिडल रो, फर्स्ट बेंच। हाँ जी, आके बताओ। मैम ए है, पॉट बेली। पॉट बेली मटके की तरह से हमारा पेट होता है, और टांगे बहुत थिन होती है, हाथ बहुत थिन। बट जो पॉट बेली है, जो पेट है हमारा, इट इज लाइक अ पॉट। दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ kwashiorkor। बैठो बेटा, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन 14, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्कर। हाँ जी ऑस्कर, आजा बेटा, ऑस्कर में आ जाओ बेटा। यस, रोल नंबर 10, ऑस्कर रोल नंबर 10। इफ 10 इज नॉट देयर, रोल, अच्छा आजा आजा बेटा, आजा 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 आजा। क्वेश्चन नंबर 15, माइक ऑन कर बच्चे पहले। somebody help her, somebody help her। हाँ जी बेटा, बोलो क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस? Evaporation. Evaporation, very good. Roll number 13 from same class. Roll number 13 from same class. Come on, आजा आजा बच्चे, आजा आजा जल्दी से। Question number 16. Clouds are formed because of? कौन सा है? पूरा बोलो। Condensation of water vapor in the air. Answer is B, Bombay. Condensation of water vapors in the air. जो water vapors है वो condense होके fluid droplets बनाते हैं, which fuse to form the clouds. Right? Then पद्म भूषण। हाँ जी बेटा, पद्म भूषण में रोल नंबर 26। पद्म भूषण रोल नंबर 26, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, 17 अभी नहीं, लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेप इन वाटर साइकिल ब्रिंग्स वाटर बैक टू अर्थ सरफेस? माइक ऑन करो बच्चे। ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन तो बेटा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स है, वो तो वेपर्स में जा रहा है। ये कहते हैं वाटर दोबारा से अर्थ पे कैसे आ जाता है?
Yes, the girl on the first bench, middle row. हाँ जी बेटा बोलो. It is precipitation. Precipitation means rainfall. उस पे आता है. precipitation का मतलब लिख लो जिसको नहीं पता. It is rainfall. हाँ जी, इसी के साथ next girl है. Next girl, हाँ जी. Same bench. Same bench. Next question. The largest source of fresh water on the earth is. Glaciers and ice caps. ये फ्रेश वाटर है. हमारी अर्थ पे मैक्सिमम वाटर सेलाइन वाटर है. ओशंस में सॉल्टी वाटर है. 97% हमारी अर्थ पे सॉल्टी वाटर है. सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है. और उसका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? दैट इज ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स. बिल्कुल ठीक है. हाँ जी, पुलित्जर. यस, पुलित्जर में आ जाइए बेटा. रोल नंबर 8. रोल नंबर 8 पुलित्जर. पीजेड रोल नंबर 8. हाँ जी बच्चे. 8 नहीं है तो 7 आ जाओ. जल्दी से आओ. आजा आजा, वर्कशीट लेकर आओ. वर्कशीट लेकर आइए. हाँ बेटा, वर्कशीट लेकर आओ. एंड यू हैव टू टेल मी क्वेश्चन नंबर 22. 22 बताइए क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड. चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. द गर्ल विद द रेड शर्ट ऑल्सो कम. सेम क्लास. हाँ जी, आ जाओ. वर्कशीट लेके आप भी आओ. यस, क्वेश्चन नंबर 22. वाटर वेपर से लिक्विड बनते हैं. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो बेटा. हाँ यस, जिसको आता है वो आके बोले. सेम क्लास कम. एक एक बच्चा, एक बच्चा. ऐसे नहीं, भीड़ नहीं करनी. इट इज कंडेंसेशन. बिल्कुल ठीक है. 23 मैंने बताया है वाटर साइकिल. 23 इज जो कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, दैट इज वाटर साइकिल. फ्रोजन वाटर इन माउंटेन्स. फ्रोजन वाटर इन माउंटेन्स. शौर्य चक्र. शौर्य चक्र रोल नंबर 22. रोल नंबर 22 आ जाओ बेटा. नहीं, 22 तो हम कर चुके. आई एम सॉरी 24. फ्रोजन वाटर इन माउंटेन्स. माइक ऑन करो बच्चे, माइक ऑन करो. हाँ, इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर्स. बच्चे, दीज आर कॉल्ड एज ग्लेशियर्स. हाँ जी, एक बच्चे का हाथ खड़ा है. एंड स्टूडेंट इज ऑल्सो सेम क्लास. सेम क्लास जो खड़ा हुआ है. आजा आगे आजा, आगे आजा. 25th. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर्स. माइक ऑन करो बच्चे. Loss of water from the plants, it is called as. जोर से. हाँ, हाँ. वन स्टूडेंट कम. ये सेकंड बेंच पे जो है. हाँ, एक एक करके, एक एक करके. हाँ, ट्रांसपिरेशन. बिल्कुल ठीक है. सेम क्लास, सेम क्लास. एक इसके पीछे लड़का खड़ा हुआ है, इसी के पीछे वाला. आजा आजा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The main reason why oceans are not good source of drinking water. Because of salty water. Because it has salty water. बिल्कुल ठीक है. Because it has salty water. Oscar. Oscar roll number 29. Oscar roll number 29. आजा बेटा, बस हम जल्दी से खत्म करें. क्वेश्चन नंबर 27. शॉपकीपर कीप सॉल्ट एंड सैंड टुगेदर. कैसे अलग करेगा? सैंड चाहिए उसको, कैसे अलग करे?
Yes, sir. बेटा आंसर इसका है सोलुबिलिटी इन वाटर, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चंस रह गए। आई थिंक योर टाइम इज, आपको छुट्टी हो गई है। ये हम क्वेश्चंस बाद में करेंगे और बाकी का हम नेक्स्ट टाइम डाइवर्सिटी रिवाइज करेंगे और बाकी के चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू टीचर्स। ये बंद कैसे करते हैं? बाय।